welcome you all on the behalf of Vidya Educational Research Foundation. This is class regarding UGC NET and the subject and the topic is mass communication and journalism. बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रसारण में और आज हम विद्या एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं ओम प्रकाश दास और आज हम देखेंगे कि आखिर जो यूजीसी नेट में मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का जो पेपर है उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं और थियोरी की तरफ हम नजर डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं, हम देखते हैं कि मास कम्युनिकेशन इज largely divided into two sections. One is personal communication and other one is mass communication. When we talk about personal communication, it is about interpersonal communication where or slightly smaller group, rather personal communication it is called. And when we talk about mass communication, so it is about actually communicating with a larger audience through technological means or through mass media. हम जानते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन जब हम बात करते हैं तो इंटरपर्सनल यानी दो व्यक्तियों या कई बार दो से ज्यादा व्यक्तियों के बीच की बातचीत या कई बार समूह की बातचीत को भी हम इसमें शामिल कर लेते हैं, जहां हम सीधे सीधे बिना किसी तकनीक के माध्यम से संचार कायम कर सकते हैं, संवाद कायम कर सकते हैं। वहीं मास कम्युनिकेशन के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि ये एक बड़े मास या कहें एक बड़े समूह तक हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, who are not in front of us or they are scattered or they are living in their own space, but through the means of mass media का इस्तेमाल करके हम अपना कम्युनिकेशन वहां तक या कहें हम अपना जो कंटेंट या जो मैसेज है वो उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। रिमेंबर, मास कम्युनिकेशन इज एसेंशियली अबाउट कम्युनिकेशन थ्रू एनी टेक्नोलॉजी एंड इन टेक्नोलॉजिकल सेंस वी कैन से थ्रू मास मीडिया, दोज सॉर्ट ऑफ मीडिया व्हिच आर एबल टू कम्युनिकेट टू द मासेस। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं द इनिशियल फेजेस. In the initial phases of communication theory and model, there was one important model which is called Shannon and Weber model. It was largely initially about mechanical sort of communication. शुरुआती दौर में जब हम कम्युनिकेशन मॉडल के विकास, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो संचार प्रक्रिया है, जब उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं तो हम देखते हैं शेनन एंड वेबर मॉडल which is largely about a linear communication. It is a very mechanical communication where we can see there is no provision of feedback. It was an effort to understand the telephonic process. That is why it is called mechanical process of communication or linear communication where there is no any idea of feedback. So it is not two-way communication, it is largely one-way communication. So the important sections we can see the information source or the transmitter source, how we actually try to communicate through which channel, through which medium. So there is a channel or there would be, you can see the receiver, where the receiver it could be a mechanical sort of equipment which can gather the signal, and destination, that means message is decoded. इसको हम समझें, ये एक तरह का मैकेनिकल या क्या मशीनी कम्युनिकेशन को दिखाता है जिसमें इंफॉर्मेशन सोर्स ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करके, ये ट्रांसमीटर अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ट्रांसमीटर का मतलब मोटे तौर पे यहाँ ये है कि ऐसा कोई तरीका, चाहे वो तकनीकी तरीका हो जिसके माध्यम से हम संदेश को आगे बढ़ाते हैं, और चैनल का इस्तेमाल करके, दैट मीन्स मीडियम का इस्तेमाल करके। जैसे अगर हम दो लोगों के बीच में बातचीत करते हैं तो व्हाट कुड बी द मीडियम बिटवीन टू पीपल? देयर इज अ साउंड वेव which is the channel.
तो दो लोगों के बीच में तो साउंड वेव्स और जो हमारे बीच में हवा है और उसके बीच में जो कंपन है, जो तरंग है, हवा तरंग, वायु तरंग, उसका इस्तेमाल करके, साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके कम्युनिकेट हम करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू अ लार्जर ऑडियंस, जहाँ तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँच सकती है, वहाँ तक कम्युनिकेट करने के लिए वी यूज वेरियस चैनल्स, वेरियस मीडियम लाइक रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, और फॉर ग्रुप कम्युनिकेशन माइक. So it could be, so receive the signal or the message which is going through a channel, it's received by something, decoded by something, and the message reach its destination. But there is a provision of noise source. That means there could be some sort of noise. These noise can be mechanical noise, can be language barrier, or language could be a noise which is not understandable or which is not understand by the receiver. So that could be a noise, but essentially in Shannon and Weaver model, the noise means a technical noise. जैसे टेलीफोन के कम्युनिकेशन में या मोबाइल फ़ोन के कम्युनिकेशन में कई बार सिग्नल कम होता है, हमें आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई देती, मैनिपुलेशन होता है, सो वो एक तरह का नॉइज है. सो इस मॉडल के सेंस में, शिनेन एंड वेवर मॉडल के सेंस में, नॉइज एक टेक्निकल. सो ये पूरा मॉडल essentially it is about a technical, mechanical process of communication. Now see another important model of communication, which is Lasswell model of communication. So Lasswell model communication is very famous and very relevant in a sense, because this model talks about effect of the message, whether it is a political communication, whether it is a communication between two people, whether it is a communication regarding group communication, whether it is through mass media. The purpose of all communication has been and it would be for the impact of the message. यानी लास्वेल मॉडल मोटे तौर पे हमें ये समझाता है कि जो इम्पैक्ट है मैसेज का वो क्या होगा. इट डिफाइंस the whole process. That is why in this there are 5 elements. Essentially it says who, the sender, who is saying what, that means what is the message, and this message is traveling through which channel or how it travels, to who is the receiver. It is also very important because receivers also decide, because he's or she is target, so the message could be different according to the framing of message, could be different according to receiver, and finally what is the effect of this message. So each and every element of Lasswell communication model is important. Sometimes who or the sender decides the impact of the message, sometimes what is the method, it will define the impact, and sometimes how, what is the channel may affect the impact, and who is receiving that message. It may be another reason that what would be the impact of the measuring of the impact. But there are many flaws in this communication model, because this model is not talking about feedbacks. There is no provision of feedbacks, no understanding of noise, purpose is not defined, and circumstances is not defined, because these elements may impact the communication, may impact the effect. Now we will move to another very important model of communication, which is Osgood-Schramm model of communication. Last two model was about a linear sort of communication process, whereas there is no feedback, there is no element of feedback. So in this process you can see a circle of communication. That means we encode message. That means जैसे कि हम कोई बात कहते हैं
जब हम कोई बात कहते हैं तो किसी लैंग्वेज में कहते हैं, किसी सेंटेंस में कहते हैं, किसी पिच पे कहते हैं और किसी भाव या कहें एटीट्यूड के साथ कहते हैं. इट डिफाइंस द इनकोडिंग ऑफ द मैसेज. एंड जब वो मैसेज जब किसी रिसीवर के पास पहुंचता है, वो रिसीवर उसे डिकोड करता है. दैट मीन्स that the receiver actually try to understand the sentence which is encoded or which is formed by the sender. So that sentence could be in a position where encoder or receiver could decode that sentence or that message, and again that receiver will respond, and when that receiver will respond, that responder will encode something in its own way, and it should be decoded by the receiver. So the role is changing. Sender may be receiver at one point of time. तो ये एक प्रोसेस है. जैसे दो लोग बात करते हैं, मैं कुछ कहता हूँ, फिर सामने वाला मुझसे कुछ कहता है, और फिर ये प्रक्रिया चलती रहती है बातचीत की. So that means encoding, decoding, encoding and decoding. That is why a circular formation, because the communication process is a continuing process according to Oskar-Schramm model. But two things which make this model very unique or very distinctive, the appearance of field of experience. The field of experience actually decides how we would actually encode the message and how we would decode the message. So field of experience, and when we find the commonality between two field of expression or two field of experience, then communication would happen, then communication will be seamless. When this process of coding, decoding, encoding, decoding will happen in this domain of communication, that message would be very fine. Like जैसे हम जब किसी अजनबी से बात करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि किस टॉपिक पे बात करें, पता नहीं सामने वाला किस मैसेज को समझ पाएगा, मेरी बात को गलत तरीके से ना ले ले. तो वो एक आइस ब्रेकिंग या शुरुआती बातचीत के लिए कई बार हम आमतौर पे मौसम की बात से शुरू करते हैं. आज बहुत गर्मी है, तो सामने वाला कहता है हाँ आज गर्मी है बहुत, आज तो ऐसा लगता है ना, सूरज तो तप रहा है. तो एक तरह से हम वी ट्राई टू फाइंड द वे ऑफ कम्युनिटी. जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है दोनों का, रिसीवर और सेंडर का, उसके बीच में कॉमन ग्राउंड क्या है, उस ग्राउंड को हम तलाशते हैं. उस ग्राउंड के आधार पे हम बातचीत शुरू करते हैं, तब एक कम्युनिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है. एक और आखिरी बात हम समझने की कोशिश करते हैं, which is actually about technological determinism, which is very important. This question has been asking again and again in UGC NET. तो अगर हम इसकी बात करें तो मार्शल मैक्लुहान, one of the celebrated communication expert from Canada, and he has been considered as a pioneer of technological determinism in the field of mass communication or communication in a general sense. So what is the idea? The idea is that in a mass communication we actually do technological mediation. That means our message go through a technological process, and every technology has its embedded feature or embedded characteristic, and that technological characteristics sometimes define the impact of the message, and sometimes the formation of the message or the process of encoding. That means Marshall McLuhan says in a sense that it is a technological mediation, technological determinism, and the famous line, the medium is the message. That means medium defines the impact, the characteristics, the formation of the message. So it is very important, as we can see, कि अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो जो बात, एक ही बात अगर हम आमने सामने किसी से करते हैं, टेलीफोन पे करते हैं,
अगर कहीं व्हाट्सएप कॉल के थ्रू करते हैं, वीडियो मैसेज या कहीं वीडियो कॉल के थ्रू करते हैं, तो इसका इम्पैक्ट अलग अलग हो सकता है। कम्युनिकेशन के लेवल में या उसके असर में फर्क पड़ सकता है, एंड इट वुड हैपन ड्यू टू the medium or the technology, because the medium is a technological medium. So even the language has been considering a language, or the verbal or non-verbal, it is a technology. So that means technological mediation is very important. So in today's introductory class, we try to identify, try to understand few theoretical issues or theoretical models as far as the mass communication is concerned. We'll meet you further in coming classes. So अभी के लिए इतना ही। मुझे यानी ओम प्रकाश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।